Good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to your EVS class. Kids, till now we have learnt about wild animals, domestic animals, pet animals, and aquatic animals. And today we are going to learn about the homes of animals. The way we live in our homes, just like that, animals also have their homes. जैसे हम घरों में रहते हैं ना, वैसे ही जानवरों के भी अपने घर होते हैं जो उन्हें सर्दी, गर्मी, बारिश और खराब मौसम से बचाते हैं और बाकी जानवरों से भी उनकी रक्षा करते हैं. Let us see some animal homes. This is a kennel. This is also called a dog house. Some people also keep their cats in it. A dog's home is mostly made up of woods. ये ज़्यादातर लकड़ियों से बनाया जाता है. This is a shed. People make sheds to keep their cows in it. लोग अपनी गायों को रखने के लिए sheds बनाते हैं. Sheds are mostly made up of wood. Some people also make it with metals or plastic sheets. This is a stable. This is the home for horses. People make stables to keep their horses in it, and they are made up of metals, wood or bricks. This is a coop. This is a structure made of wood to keep the hens and chickens. Kids, all the homes you saw were made by humans for their animals. Now we are going to see some homes that are made by nature or made by animals themselves. This is a den. A lion lives in a den. हिंदी में हम इसे कहते हैं गुफा. ये गुफाएं जंगल में बनी होती हैं. This is not made by humans. This is made by the nature. ये प्रकृति द्वारा बनाई गई होती हैं. This is a hole. A snake lives in a hole. जमीन पे जहाँ भी खड्डे होते हैं, सांप उनको अपना घर बना लेते हैं. और ये जो होल्स होते हैं, ये भी प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं. ये मैन मेड नहीं होते हैं. These are made by the nature. These are called burrow. Rabbits live in burrows. Some more animals like the mice and moles also live in burrows. Some burrows are made by nature and some burrows are made by these animals by digging. ये animals इनको dig कर कर खोद के इनको बनाते हैं. और क्योंकि ज़मीन के अंदर की जो जगह होती है वो ठंडी होती है, तो ये जानवर गर्मियों के दिनों में यहाँ पे रह के अपने आप को ठंडा करते हैं और बाकी जंगली जानवरों से भी खुद की रक्षा करते हैं. This is a nest. Birds live in the nest. Birds छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके नेस्ट बनाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं. And they lay their eggs in these nests. These nests are mostly made up of twigs, grass and leaves. So kids, these were some animal homes. Now you know that some animal homes are made by humans and some animal homes are made by the nature, and some of them are made by the animals themselves. Now this is the worksheet which you have to do. Here you have to match the animals with their homes. जो एनिमल जहाँ रहता है आपको उसको उसके घर के साथ मैच करना है. जैसे केनल को किसके साथ मैच करना है? यस, डॉग के साथ. होल को किसके साथ मैच करना है? यस, स्नेक के साथ. सो लाइक दैट यू ऑल विल डू दिस वर्कशीट एंड हैव फन. थैंक यू.